ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तो सर्वप्रथम दशहरा जो कल है उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा दशहरे की। क्योंकि 3.5 मुहूर्त बहुत बढ़िया माने जाते हैं, उसमें से एक मुहूर्त दशहरा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उसमें रावण जलाते हैं, अभी जैसा हम डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन ये रावण कोई बाहर नहीं है असल में। हर एक ने अपने भीतर जो रावण बसा हुआ है उसको खोजना है और उसको जला देना है। कैसे जला देना है? साधना के अग्नि में जला देना है। सो ऑल द mythology is always symbolic. Mythology is a symbolic representation of religion. तो रावण को जलाना यानी अभी जो तो रावण को कभी हो गया था, अभी उसको खोज के जलाना, ऐसी बात नहीं है। अपने भीतर अगर रावण है तो उसको खोजना पड़ेगा। जो कोई दुष्प्रवृत्तियां अपने अंदर है वही रावण है, और कोई रावण नहीं है। हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसी को रावण के रूप में हमने जानना है। और साधना के अग्नि में उसको जलाना है। यही खरा दशहरे का मतलब है। और इसीलिए उसमें सीमोल्लंघन भी होता है। यू हैव टू रियली ट्रांसेंड द लिमिटेड कॉन्शियसनेस टू द अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस। रियल सीमोल्लंघन वो है जिसमें आपकी जो चेतना मर्यादित रूप में है, जो शरीर, मन, बुद्धि, इसके अंदर जो सीमित हुई है चेतना, उसको असीमित करने का उपाय ही योग है। वही अध्यात्म है और वही असल में सीमोल्लंघन है। दैट इज ट्रांसेंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो दैट इज व्हाट दिस दशहरा रियली मीन्स। तो इसके लिए सभी को शुभेच्छा। और अब हम अष्टावक्र की ओर। हेलो हेलो, somebody wants to ask anything? No, we express same wishes to you also. Oh, अच्छा You. अच्छा अच्छा, same thing to me. Okay, thank you very much for wishing the Shera for me and for you and for everybody. So actually such wishes are necessary because everybody is trying to do that sadhana. So कितनी अच्छाई, हमारे अच्छाई के तरफ या बुराई के तरफ हम सजग हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। बिकॉज जनरली वी आर नॉट अवेयर एट ऑल that everybody thinks that he is okay, only the world is a problem. There is a lot of problem out there in the world, not in me, but the world is inside also. That is what continuously Ashtavakra is really telling. That the problem is in you. You have to recognize that problem. You have to bring it to the forefront and you have to finish it off with your own sadhana. That is the continuous discussion which is going on all the time in Ashtavakra Gita. So anyway, we had come to chapter 9. We have just started chapter 9. The first two stanzas of chapter 9 we finished, and we have come up to the third stanza. So today we are beginning with the third stanza of 9th chapter of Ashtavakra गीता। अष्टावक्र गीता के जो 9वां प्रकरण है उसमें तीसरे श्लोक से हम शुरुआत करने वाले हैं। पहले 2 श्लोक हमने पिछले दफा लिए थे। सो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द थर्ड श्लोका।
And what it is saying is anityam sarvamevedam तापत्रितय दूषितम असारम निंदितम हेयम निश्चित्य हेयम इति निश्चित्य शाम्यति अनित्यम सर्वमे वेदम। ये जानो सर्वम एवेदम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, इसको जानो। और सब कुछ कैसा है? तापत्रितय दूषितम, इट इज फुल ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ मिजरी। त्रिताप से युक्त, त्रिताप से दूषित ये सारा संसार है। और इसलिए यह संसार असार है। असारम, निंदितम, हेयम। ये संसार कैसा है? असार है। इट इज वर्थलेस, इट इज होपलेस, इट इज निंदितम, इट इज कंटेम्प्टिबल, एंड इट इज हेयम, इट इज समथिंग विच इज टू बी रिजेक्टेड। हेय यानी छोड़ देना, छोड़ देने लायक है। इट इज वर्थ रिजेक्शन। इसको निश्चित रूप से जो जाना, निश्चितम शाम्यति, हेयम इति निश्चितम शाम्यति, निश्चित रूप से जो जाना कि संसार असार है, ये जग अनित्य है, त्रिताप से दूषित है, अस, असार है, निंद्य है, त्याज्य है, ये निश्चित रूप से जो जानता है वो ज्ञानी शांत हो जाता है। निश्चित्यम साम्यति। So this is what the shloka really means. So wise man understands the world as transient, tainted with three types of miseries. It is hopeless, contemptible, worth rejecting, and having definitely known this fact, not only intellectually, definitely knowing means what? You are adopting it. इंटेलेक्चुअली ऑल ऑफ 1000 बार हम कर चुके हैं, संसार तो आसार है, 1000 बार हम कहते हैं। बुद्धि तो जानती है, बुद्धि के स्तर पर हम सब जानते हैं कि त्रिताप से युक्त है, संसार है, उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन बुद्धि के स्तर पर जब समय आ जाता है तो इस संसार के साथ लगाव हो जाता है तुरंत। अनित्यता के साथ लगाव हो जाता है। सो अनित्यम सर्वमे वेदम तापत इति निश्चित्य। You should be convinced from inside. If you are convinced, then you will not go after that samsara. Samsara means something which is going on in a repetitive way. Okay, so निश्चित रूप से आप जानते हैं क्या? ये सब आसार है, ये सब निंदनीय है, ये सब त्याज्य है, हेयमिति, ये सब अनित्य है, ये तब त्रिताप से भरा हुआ है। निश्चित रूप से जानते हैं तो लगाव नहीं होगा यह संसार के साथ। देन यू विल नॉट बी अटैच विद द वर्ड इफ यू नो इट फॉर विथ सर्टनटी। नोइंग विथ सर्टनटी, निश्चितम शाम्यति, निश्चित्य, यू शुड नो इट फॉर सर्टन, देन यू विल नॉट गो आफ्टर इट। ओके, तो नाउ दिस इज व्हाट बुद्धा आल्सो हैड टोल्ड एक्चुअली। सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम। क्यों ये जीवन दुखमय हो चुका है? बुद्ध ने एक सूत्र दिया, सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम। व्हाई लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी? बिकॉज एवरीथिंग इज मोमेंटरी, एवरीथिंग इज चेंजिंग। जगत, ये शब्द का जो अर्थ है गच्छति इति जगत, गच्छति इति जगत, जगत परिवर्तनशील है और इसलिए अशाश्वत है, इसलिए क्षणभंगुरता उसमें है। इट इज ऑल मोमेंटरी। और ये जान सक, और इसलिए दुख है, इस जीवन में दुख है। सो व्हाई यू वांट टू गेट अटैच टू दिस जगत विच इज मोमेंटरी, दिस वर्ल्ड विच इज मोमेंटरी? तो सब कुछ बदल रहा है। ये केवल बुद्धि के स्तर पर तो हम जानते हैं कि हाँ सब कुछ बदल रहा है।
अंतर्बाह्य, मेरा शरीर बदल रहा है, मेरा मन बदल रहा है, मेरे विचार बदल रहे हैं, बाह्य परिस्थिति बदल रही है, कितनी बदल रही है। अभी अभी हम लोग यूक्रेन वार के बारे में बोल रहे थे और सोच रहे थे कि ये वार अगर बंद हो जाएगा तो समस्या चली जाएगी। अब इसराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया। इवन एट द ग्लोबल लेवल थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। कितना बदल रहा है सब कुछ। ओके। और इसलिए हम दुखी है। जगत का मतलब ही है गच्छति इति जगत। So since everything is momentary, since everything in this world is changing, life is full of misery. That is what Lord Buddha told us. Okay. And it is full of त्रिताप। इसके बारे में भी बहुत चर्चा हम कर चुके हैं। थ्री काइंड्स ऑफ बेसिक मिजरी। आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख। इसको त्रिताप, Tritapadushitam. They are the three basic kinds of miseries which have been told in every scripture. Adi Bhautika, misery caused by living and non-living things of the world. This is called as Adi Bhautika कारणों से होना हुआ दुख। ओके। सो किसी को सांप काटा, किसी को कुछ काटा, यह आदि भौतिक दुख है सब। हम्म। आदि दैविक दुख, natural calamities like the flood, like the earthquake. Some time back only there was earthquake. What you can do about it? Tomorrow, if there is earthquake and if your house collapses, can you imagine how much misery it will be? And it is happening in the world. We read about it, we see it in the TV and how the house is collapsing, and the people who are so comfortable in their house, in no time they are on the street. Just imagine. With God's grace, that have not come to us with God's grace, but anytime it can happen. नहीं तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा पानी पानी सभी जगह हो गया, फ्लड्स। So many natural calamities can be there. These are the आदि दैविक दुख। एंड आध्यात्मिक दुख, आपके कुछ स्वभाव के कारण ही आप अपने अपने तरफ दुख को खींच लेते हैं। आध्यात्मिक, बिकॉज ऑफ द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स विच यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ ओनली। घर में जो बहुत सारे झगड़े होते हैं ना, उसको टाल सकते हैं हम, लेकिन झगड़े निकाल देते हैं कि तुम्हारा सच है मेरा सच, वेदर योर ओपिनियन इज वैलिड इन दिस हाउस और माई ओपिनियन इज वैलिड। तो सासू और the daughter-in-law and mother-in-law, very well known in conflict. Even the old father and the son, well known conflict, conflict with the neighbor, and so on and so. ये आध्यात्मिक काइंड ऑफ मिजरीज, स्वभाव के कारण। झगड़ा करना ये हमारा स्वभाव ही बन गया है, कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं है ना तो कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। आध्यात्मिक। So Adi Bhautika, Adi Daivika, Adhyatmika. So these are the Tritapa. They are very famous three kinds of miseries which have been told in many, many, many scriptures. We are all acquainted with it. So Tritapa Dushitam. ये संसार ऐसा ही कि कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। कभी ऐसा लगेगा कि ऑफिस में प्रॉब्लम हो गए, इसलिए मैं टेंशन में हूँ यार, क्या होना है मालूम नहीं, पेमेंट भी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, प्रमोशन का तो बात ही नहीं है। सो मच ऑफ ट्रबल इन द ऑफिस। वो खत्म हो जाता है तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है। हम्म, और वो अगर ठीक हो गया तो वो कोविड जैसी बीमारियां, महामारी आ जाती है, एंड एवरीबडी इज वरीड, एवरीबडी इज टेंस। नहीं तो कोई युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होते। सो प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। और ये इसी को संसार कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि अनित्यम सर्वमेवेदम तापत्रय दूषितम असारम।
It is worthless, really. Ninditam, it is something which is to be rejected. हेयम, इसका त्याग करने में ही बुद्धिमत्ता है. जो निश्चित रूप से ऐसा जानता है और करता है, इति शाम्यति, वही शांत हो जाता है, वही योगी शांत हो जाता है. इट इज नॉट जस्ट इनफ टू टॉक अबाउट इट. इट इज नॉट जस्ट इनफ टू नो इट इंटेलेक्चुअली. हाँ, मुझे मालूम है यार ये संसार. एक बोलता है कि अरे यार ये क्या चल रहा है. हाँ, राइट राइट राइट, क्या चल रहा है, मैं भी जानता हूँ क्या चल रहा है. लेकिन वो भी मिजरेबल है, वो भी मिजरेबल है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इफ यू ओल्ड पीपल, फ्यू पीपल मीट एंड दे टॉक दैट, अरे क्या यार, कैसे हो, क्या बताऊं यार. वो अपनी कहानी शुरू कर देता है, उसकी कहानी खत्म हो गई तो हम अपनी कहानी शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में ही वही समस्या है. नाउ व्हाई यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट? दैट इज बिकॉज यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस असार संसार. ये असार संसार के साथ आपका इतना लगाव है. वो लगाव जब तक नहीं छोड़ देते, कहां से ये दुख चला जाएगा. It is impossible to overcome misery if you are attached with something which is ever changing reality. सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम. तो ये दुख से बाहर अगर आ जाना है आपको, तो ये असार संसार को टालना होगा. असारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य शामति. दैट इज द सॉल्यूशन which is given. So by meditating upon the worthlessness of the world as something which is to be given up, which is to be rejected, iti nishchitya, that should be known definitely, and known not only intellectually. You should really meditate and realize that it is so. Then only it is possible to come to that silence, come to that happiness which is already there within. Because you have attached yourself to the samsara, you are miserable. That is what Ashtavakra is telling. Okay. So if you are watching the world like the waves of the ocean, you stand aside, you become only Sakshi. This is the message which is given again and again and again by Ashtavakra. कि जगत में जो कुछ हो रहा है साक्षी भाव से देखो. उसके साथ लगा हो गया तो तुम गए काम से, तो तुम दुखी हो जाओगे. If you are watching the waves sitting on the by the side on the seashore, waves come. They are transitory things. They do not affect you. If you are involved, all sorts of miseries will come to you. And there is a very beautiful Zen poem which I read. And the Zen poem says exactly the same thing. A very beautiful poem. What it is saying is, the storm is over. The last clouds float away. Now we sit together, the old mountain and I, until only the mountain remains. This is actually a meditation. This is something which is to be meditated upon. Okay, the storm is over. ये जो जगत के जो त्रिताप के द्वंद्व चल रहे हैं वो चले जाते हैं. Like a storm, it comes and goes. The last clouds passed away. They float away. Now we sit together, the old mountain and I. Now here mountain, the stability is the original consciousness which we have. Something which doesn't move, something which is nitya, something which is shashwata, is symbolic of that mountain. The old mountain and I, there we sit. So I am with that steadiness now. मेरे को निश्चित हो गया कि ये सब these are the passing clouds, this is the passing storm. Okay. How long I sit? Until only the mountain remains. Now that I should go, that I should vanish, and only that unchangeable, immutable reality should remain.
Unfortunately, some noise is going on. If somebody has kept the mic open, if you can close it, it will be nice. कि जो noise हो रहा है चला जाएगा तो अच्छा क्लोज लगेगा. किया मैंने दूसरा. Okay. Koso Kalo. So we come to fourth verse in the ninth chapter. Koso Kalo Vayah Kimva Yatra Dvandvani No Nrunam तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात. कोसो कालो वयम किम वा. अरे ऐसा कौन सा काल है और ऐसे कौन सी उम्र है जब ये द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे. द्वंद्व इज कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. द्वंद्व यानी जो लड़ाई चल रही, जो झगड़े चल रहे, ये लड़ाई झगड़े, क्या ऐसा कोई काल है जिसमें ये लड़ाई झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे? क्या ऐसी मेरी उम्र है जिस उम्र के बाद ये लड़ाई झगड़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा? कोसौ कालो वयक किम वा. Okay. Will the pairs of opposite come to an end at any age or any time? जीवन में आने वाले द्वंद्व कभी खत्म हो गए, किसी उम्र में खत्म हो गए, किसी काल में खत्म हो गए, वो कभी नृणाम. नृणाम मीन्स फॉर ए मैन, will there be any time when there will not be any conflict in life? Do you remember? Now this is something which we should look at our own life actually, right from the childhood up till now, and see was there any time when there was no conflict in my mind at all. द्वंद्व नहीं थे. कौन से द्वंद्व? सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यही तो द्वंद्व है. Sometimes somebody insults us. Oh, we are hurt so much. इसने मेरा अपमान किया. कितने दिन तक मूड चला जाता है. And sometimes praise, सुख और दुख. Sometimes मैं सुखी होता हूँ, sometimes मैं दुख होता हूँ. लाभ और हानि. Sometimes I gain something, I am profited. Sometimes I am at loss. These are called dvandva. Dvandva is a conflicting situation. Dvandva is a situation which unsettles you completely. That is called as dvandva. So sukha dukkhe same krutva labha labho jaya jayo. Sometimes we are victorious, sometimes we are defeated, sometimes we gain something, sometimes we lose something, sometimes we are insulted, sometimes we are praised, sometimes we are happy, sometimes we are weak. These are called dvandva. These are called conflicts in life. Now, is there any time in our life when these conflicts are not at all there? That is the question which is asked. And इसलिए वो बोलते क्या है? Obviously, there is no time. तान उपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात. तानि upeksha. You be detached from that. You remain inert towards them. उपेक्षा का भाव वो द्वंद्वों के प्रति रखो. उदासीनता का भाव उस द्वंद्वों के प्रति रखो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज यथा प्राप्तवर्ती. इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्स. यथा प्राप्तवर्ती, ये यदृच्छया जो प्राप्त होता है, अपने आप जो हमें मिलता है, वट एवर कम्स वंस वे, whatever has come your way, accept it with grace as a gift of God, whether it is good or bad. Accept it, whatever comes your way. It is known as yatha praptavarti. जो कुछ आपके पास आता है, जो कुछ आपकी सिचुएशन है, accept it with grace as a gift of God. Accept it. It is known as yatha praptavarti. यदृच्छया जो प्राप्त होता है, ऐसा जो एक्सेप्ट करता है, सिद्धिम अवाप्नुयात, ही अटेन्स टू परफेक्शन, वो सिद्ध पुरुष होता है. सो मनुष्य हमेशा ऐसी आशा करता है कि आज से कल हमेशा अच्छा होगा. कि आज की समस्या है ना मेरी, आज तो मैं प्रॉब्लम में हूं, लेकिन ये चली जाएगी.
कल आज मुझे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर कल वो चला जाएगा, मैं पैसे कमा लूंगा और पैसे थोड़े इकट्ठे कर लूंगा. नाउ दिस इज गोइंग ऑन. इफ वी लुक एट आवर लाइफ, in the childhood also we had problems. These dvandvas were there when we were children. Now we have forgotten that. If we bring back those memories, उस समय कौन से प्रॉब्लम, पढ़ाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. समथिंग विच वी अटरली डिसलाइक, वो किताबें, वो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और मैथमेटिक्स, सो मेनी बुक्स और पढ़ाई. और हमेशा वो एडवाइस करते थे हमको सब, क्या वे टीवी नहीं देखना, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अच्छे नंबर कमाओ. वी डिसलाइक दैट. और उस समय ऐसा लगता था शिक्षक तो हमारे शत्रु है, ऐसा लगता था, मारते थे पीटते थे. सो दैट वाज द प्रॉब्लम इन द चाइल्डहुड. शिक्षण, पढ़ाई, उसके बारे में जो द्वंद्व मन में थे, वो द्वंद्व थे. और ऐसा उस समय लगता था बड़ा हो जाऊंगा ना, ये सब प्रॉब्लम चले जाएंगे बड़े हो जाने के बाद. देर विल नॉट बी, ये पढ़ाई विढ़ाई सब कितने अच्छे, ये बड़े बड़े लोग कॉलेज में आते हैं, कितना अच्छा है. when we become young, other kinds of problem come. What kind of problem? Then we have problem of attachment to the opposite sex. हाँ? स्त्री को पुरुष के बारे में आकर्षण, पुरुष को स्त्री के बारे में आकर्षण. और फिर so much of conflicts are there in the college students, in the young people, कि मुझे जो अच्छे लगती है दूसरे को भी अच्छी लगती है. अब वो किसके पास जाएगी मालूम नहीं है. सो आई एम एंक्शियस whether I will, or I am anxious about getting the job. कितना कंपटीशन है जॉब के बारे में. अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आरक्षण है, और उसमें मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, मैं कैसा सेटल हूँ. दैट इज द एंजाइटी विच इज व्हेन यू आर यंग. ओल्ड एज में और प्रकार होते हैं. हाँ, व्हेन वी आर ओल्ड, अब मेरा कोई सुनता नहीं है. हाँ, मेरा खुद का लड़का मेरी सुनता नहीं है. I have got no value in my house since I have retired, since I have stopped earning money. Nobody is taking my opinion at all. Now this is the worry of the old man. Hmm? मेरा अनादर कर रहे हैं सब लोग, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. दिस इज द ओल्ड एज प्रॉब्लम. सो इज देयर एनी एज in which these dvandvas have vanished? This is what he is asking. कोसौ कालो वयः किंवा यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम. आदमी को कभी द्वंद्व नहीं थे, ऐसा काल है क्या, ऐसा कोई उम्र है क्या कि जिसमें ये द्वंद्व खत्म हो जाएंगे. एक ही बात है, तान उपेक्ष. You have to be inert towards them. You have to only see your dvandvas as a witness only. So what is the thing which we have to do? Suppose if we can look at our own difficulties and say, look how this fellow is suffering. When you are suffering, if you can say this to yourself sincerely, look at this fellow, he has been insulted and he is burning inside. If this thought comes, the anger will come to the half. आप अगर साक्षी रूप से अपने भीतर चल रहे हुए झगड़े, अपने भीतर चल रहे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व को देखने लगते हो, तो द्वंद्व चले जाते हैं. So you should be able to say that, oh, look at this fellow. He is hurt so much because nobody is looking at him, because nobody is consulting him, because nobody is giving him respect. Now I become tan upeksha yatha praptavarti. I take life as it comes to me. Now this situation has come to me. I accept it as a wonderful thing. God has given me this time now. It's okay. I will come out of it. When God has given me this problem, God will also give me the solution. Yatha praptavarti is a very wonderful term. Yadruchaya, जो मुझे प्राप्त होता है उसका मैं स्वीकार करता हूं.
खुले दिल से स्वीकार करता हूँ. And we have studied this example earlier also. Look at Sri Rama himself, you know, when he was a young person, he was told that he is going to be the prince. सारे अयोध्या में डिक्लेयर हो गया था कि राम राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो अपने राजा होने वाले हैं. उत्सव चल रहे थे सभी जगह में. और जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था उसी दिन उसको बताया गया, नहीं नहीं, अभी राज्याभिषेक नहीं होने वाला है, तुम राजा नहीं होने वाला है, तुमको तो वन में जाना है तुरंत, इसी समय सब छोड़ छाड़ के यू हैव टू गो टू द फॉरेस्ट. you know there is no option for you. It is an order. Now anybody else would have collapsed. Anybody else would, अरे मैं राजा बनने वाला था और अभी मुझे वन में जाने के लिए बोल रहे. But look at Sri, this is called Yatha Praptavarti. Sri Rama was not at all disturbed, not at all. In fact, he smiled. Actually, Dasharatha was very much disturbed. Actually, he had heart attack. He was about to die. You know, he collapsed. But in fact, Rama was telling it that why you are so sorry about it? Do you feel that there is some injustice on me? Not at all. I am so happy. Since such a long time, I wanted to enter into solitude and do some yoga sadhana. Actually, I was praying God that let me have some solitude and enter into forest and do lot of sadhana and realize myself. God has listened to my prayer. I am blessed. Now this is called yatha praptavarti. कि उसके सामने जो विषय है, आनंद से उसने स्वीकार किया उस चीज का, और उसने कहा ये भगवान का प्रसाद ही है कि मुझे जाने मिल रहा है अभी वन में. आई विल डू माई तपस्या देयर. सो दिस इज कॉल्ड यथा प्राप्तवर्ती. और ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं कि जो अपने तरफ ही साक्षी भाव से देखते हुए जो प्रॉब्लम्स है उनका स्वीकार करना सीख जाते हैं. सो दैट इज यथा प्राप्तवर्ती, यदृच्छया प्राप्त होके तान उपेक्ष उदासीन हो जाओ, समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाओ. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड in this very beautiful verse which is given. So let us come to next verse number 5 now. नाना मतम महर्षिणाम साधुनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेद्यमापन्न कोन शाम्यति मानवः. Now this is another very beautiful thing which has been told. Nana matam maharshinam, sadhunam, yoginam tatha. So if the man becomes conscious about his own misery, about the struggle of life, he starts looking for advice. Where from he will get advice? Maharshinam, महान ऋषि मुनि जो हुए, साधु नाम, साधु सन्यासी, योगी नाम, बहुत बड़े योगी. लेकिन उनके पास जब जाता है तो उसको मानता है, उसको पता चलता है इनके भी अलग अलग मत है साधना के. somebody is telling that no, you have to go by the path of discrimination. ज्ञान योग से ही जाना उच्चा है. महर्षि के पास गए तो बोलेगे कि ज्ञान योग साधना करो. You discriminate, you find out, use your intellect, use your discrimination, adopt the path of discrimination. ज्ञान योग साधना. साधु के पास गए तो बोलते हैं भक्ति योग साधना करो. अरे भाई, भज गोविंदम मूढ़ मते. आप भक्ति करो ईश्वर की प्रार्थना करो. प्रार्थना में इतनी शक्ति है, प्रार्थना से तेरी सारी समस्या चली जाएगी. और अमुक एक भगवान के पास जाओ, शिव के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ, हनुमान के पास जाओ. सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. और ये व्रत करो, वो व्रत करो, उपवास करो. So many vrata vaikalyas they will take. Yogi naam tatha. So yogis will tell that you do asanas, you do pranayama, you do dhyana. So नाना मतम महर्षि नाम, ये सब लोग अच्छे हैं और ये साधु संतों कुछ झूठ नहीं बोल रहे.
ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो झूठ बोल रहा है, लेकिन इनके मत अलग अलग है. सो शुड आई गो बाय द पाथ ऑफ इंटेलेक्ट? शुड आई गो बाय द पाथ ऑफ भक्ति? शुड आई गो बाय द पाथ ऑफ योग विथ चित्तवृत्ति निरोधा? और देर आर सम हु टेल्स दैट अरे ये तो इतने ओपिनियंस है, तुम कर्मयोग करो ना. यू डू योर वर्क, डिसइंटरेस्टेड वर्क, निष्काम कर्मयोग करो, सब कुछ हल हो जाएगा. सो कर्मयोग करो. या the other hata yogic swatmarama concern, he tells you ekante mathika madhye स्थातव्यम हठ योगिनाम. जाओ, ये सारा संसार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, एकांत में जाओ, उसमें एक झोपड़ी बनाओ. एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिनाम. तो आदमी को ऐसा लगता है कि किसका सुनना मैंने. What I have to listen to? Should I really leave my wife and my children and my business and whatever, and I should enter into forest and do tapas? Or should I adopt the path of jnana or path of bhakti or path of yoga or karma yoga? What? Nana matam maharshinam sadhunam yoginam tatha. What Ashtavakra is telling? Drishta nirvedam apanna. Adopt an attitude of indifference towards all these opinions. Be अनादर करो, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोलता है. Ashtavakra is not telling that all these opinions of the sadhus and maharshis and yogis are useless and throw them out. No, no. But he says that be indifferent to them. If you are indifferent to them, drashtva nirvedamapanna. If you are equanimous, if you are not confused with all these opinions, इनके प्रति भी अगर आप उदासीन हो जाते हैं, इनके प्रति भी आपको समत्व का भाव पैदा होता है और आप शांत हो जाते हैं, यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस फ्रॉम विद इन. द गुरु इज इनसाइड ओनली. द प्योर कॉन्शियसनेस इज इनसाइड ओनली. तो आपके प्रकृति के अनुसार आप ही अपना मार्ग चुनना है. Don't get confused with the opinions of the people out there. Not that they are bad, they are great. Maharshis are great, sadhus are great, yogis are great, they are wonderful, they are great, scriptures are great. But what is your path? You will know it. If you go inside, if you become calm and quiet, if you listen to your inner voice, आपकी भीतर की जो आवाज है वही असल में आपको मार्ग दिखाने वाली है, वही असल में आपको आपका गुरु है. दैट इज व्हाट अष्टावक्र इज गोइंग टू शो. तो अपने प्रकृति के अनुसार अपने हृदय की आवाज सुनकर अपना रास्ता चुनो. दैट इज व्हाट दिस वर्स इज टेलिंग अस. एंड देन further he is telling what is the guru is inside. So verse number 6 is telling us कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेद समता युक्ता यस्तारयति संश्रुते. This is the most important verse in this particular chapter. Most important word. सबसे महत्वपूर्ण ये श्लोक है ये प्रकरण का. कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम. मूर्ति परिज्ञानम means realization of the true nature of consciousness. मूर्ति प्रज्ञान यो आपका जो चैतन्य का साक्षात्कार आप करो, चैतन्य को यथार्थ से जानो, खुद के चैतन्य को यथार्थ से जानो. मूर्ति पर ज्ञानम मीन्स रियलाइजेशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस. Realize the true nature. Now, what does it mean by realizing true nature of consciousness?
How we know consciousness? We know consciousness which is expressing through the mind. We know consciousness which is expressing through the intellect. We know consciousness which is expressing through the body and senses. तो हमारा चैतन्य के साथ जो परिचय है वो कैसे है? इंद्रियों द्वारा जो चैतन्य प्रकट हो रहा है उससे हम परिचित है। मन के द्वारा जो चैतन्य प्रकट हो रहा है, यानी मन की इच्छा है, मन के राग लोभ, ऐसा ही चैतन्य प्रकट हो रहा है। सेंशुअल डिजायर्स विच आई हैव, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसी चैतन्य से हम परिचय है हमारा, या बुद्धि का चैतन्य। सो आई एम acquainted with that consciousness which is expressing through body, senses, mind, intellect, which is reflected consciousness. परावर्तित प्रकाश से मैं परिचित हूँ। I do not know the consciousness itself. Okay. कृत्वा मूर्ति पर ज्ञानम मीन्स रियलाइजेशन ऑफ शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य को पहचानो, ऐसा वो कहते हैं। कैसे पहचानो? द ट्रिपल साधना हैज बीन गिवन in this particular verse. There is a triple sadhana. Nirveda samada samata yuktya. Nirveda with indifference. Samata with equanimity. Yuktya with intelligent research. So these are the three ways in which you can know your Shuddha Chaitanya, your pure consciousness. Nirveda, indifference. Be indifferent to everything, even to Maharshinam, Sadhunam, Yoginam, Matam. जो स्क्रिप्चर्स है वो ठीक है, उसको फेंक मत दो, लेकिन उसके प्रति भी एक प्रकार उदासीनता का भाव रखो, समता का भाव रखो। Nirveda Samadha and Yukti, the intelligent way in which you have to adopt it. Whatever has been told in the scriptures, whatever has been told by sadhus, sannyasis, maharshis, yogis, how you can adopt it for yourself. अपने प्रकृति के अनुसार आप क्या डाइजेस्ट कर सकते हो, आप क्या पचा सकते हो, आप क्या एसिमिलेट कर सकते हो, वो यस्तारयति संस्कृते। एंड ये संसार चक्र को, संस्कृति यानी एक्चुअली द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस विच इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू, संसार चक्र, ये संसार चक्र को ही ठीक सा दे दो और कहीं भी जाने का जरूरत नहीं। यू लुक एट योर ओन लाइफ, look at your own life, learn. Life itself is your teacher. Chaitanyasya na kim guruhu. Life itself is your teacher. You can learn from your own life. ये लाइफ पे जो संसार चक्र चल रहा है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट चक्र। वो चक्र में आप ही फंस गए हो, वो चक्र के साथ आप ही घूम रहे हो। लेकिन आप ये अगर साधना करेंगे निर्वैध समता युक्त्या, if you become indifferent to your life itself, to the life process, if you can look at life process with indifference, with equanimity, samata, with yukti, intelligently you are investigating into process of life, you know. So this is the triple sadhana. Nirveda samata yukta yas tarayati samsrute. Then you will be able to come out of the wheel of existence. So that is what he says. निर्वेद समता और युक्ति का उपयोग करते हुए जो इस संसार चक्र का रहस्य जानेगा वह सचमुच गुरु है। चैतन्यस्य न किम गुरु। How you will know the secret of consciousness? How will you know the pure consciousness? Pure consciousness is expressing in your own life. आपके जीवन में वो चैतन्य ही प्रकट हो रहा है। अभी कैसे प्रकट हो रहा है? शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वो प्रकट हो रहा है। उसको देखो, ठीक सा देखो, निर्वेद से देखो,
समता से देखो, युक्ति से देखो, and if you look at that, then you know what is consciousness. चैतन्यस्य न किम गुरु, और कौन सा गुरु तुमको सिखाने वाला है चैतन्य के बारे में. इफ यू कांट लुक एट योर ओन लाइफ एंड लर्न फ्रॉम योर ओन लाइफ, where is the question of learning from other gurus who are outside? Their experiences, even adhyatmic experiences, are good for them. There is no doubt. They are great. We salute them. But then your life is your life. You know, and you can learn. Your life is your real teacher. Hmm? तो जो ये संसार चक्र को अच्छी तरह से देख पाता है, ही बिकम्स द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ. कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु, निर्वेद समता युक्त्या यस्तारयति संस्रुते. So then he will be able to save himself from the wheel of existence. संसार चक्र से वही बच सकता है. Then what he says, पश्य. Now we are on 7, सूत्र number 7. पश्य भूत विकारस्त्वं भूतमात्रां यथार्थतः तत्क्षणात् बंध विनिर्मुक्ताः स्वरूपस्थो भविष्यसि. So I have to, when you are looking at your life, the thing which you will understand is, if you observe the things of the world with equanimity, you will understand that these are nothing but modifications of 5 elements. भूत विकारस्त्वम, पश्य भूत. ये जो कुछ घटित हो रहा है, पंच महाभूतों का खेल ही है. पूरा संसार जो मुझे दिखाई दे रहा है, भूत मात्राम यथार्थता. पश्य भूत विकारस्त्वम भूत मात्रम यथार्थता. पंच महाभूतों का प्रकटीकरण यथार्थता से देखने वाले को पंच महाभूतों के विकार मात्र ये सब घटनाएं, वट एवर इज हैपनिंग इन दी वर्ल्ड इज नथिंग but the modifications of the 5 elements. He understands it. और दूसरा कुछ संसार नहीं है. और ये बोध जिसको हो जाएगा, तत्क्षणात् बंध विनिर्मुक्ता. So instantaneously he will have total freedom, he will have total liberation. तत्क्षण तुम बंध मुक्त हो जाओगे और निज रूप में स्थित हो जाएंगे. स्वरूपस्थो भविष्यसि. So if you look at your life, if you can, जो कुछ जीवन में घटनाएं घट रही है, वो पंच महाभूतों की लीला चल रही है, उनका खेल चल रहा है. इस प्रकार आप अगर देख पाओगे, so the 5 elements are, the 5 elements are inert and insentient. All the material things of the world are made up of these 5 elements, and hence they are inert. A person having the interest in the worldly things creates bondages out of them. We are responsible for creating bondages because we take interest in the things of the world. By themselves, the things of the world are not imposing bondages on you. हम कहते हैं कि ये जगत हमारे ऊपर आसक्ति नहीं डाल रहा है. It is not the events in the world which are creating attachment for us. We are getting attached to them because we are not seeing them as only the sports or only the vikara which is taking place in the 5 elements. Okay, if we look at them in whatever is happening in the objective world only as the sports of the 5 elements, we shall not have any problem if we witness them, the attachment and detachment. ऐसा था कि एक
एक राजा था और उसको एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ऐसा एक पुत्र प्राप्त हुआ, द प्रिंस। ही वॉज ओनली 5 years ओल्ड, ब्यूटीफुल प्रिंस। और एक बार ऐसा हुआ कि उसमें वो राज्य में एक ड्रामा था, एक नाटक था, और उसमें एक रोल था 5 year के लड़की का। एंड सो द प्रिंसेस, वो रानी ने ऐसा सोचा कि मेरा जो लड़का है उसी को प्रिंसेस बना देते हैं, उसी को लड़की बना देते हैं। तो बिकॉज इट वाज ड्रामा, दिस 5 year old child was actually given the costumes of a girl, and he appeared in the girl. He was looking so beautiful, and therefore everybody appreciated the beauty and the act. This was a small act of a child. It was child's play only. बट दिस जो महारानी थी उसने ऐसा सोचा कि ये तो वाकई बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है एज ए प्रिंसेस। एंड देयरफॉर शी आस्क्ड ए पेंटर, द रॉयल पेंटर, टू हैव द पेंटिंग ऑफ दैट प्रिंसेस। यानी वो तो प्रिंस था लेकिन वो कॉस्ट्यूम के अनुसार, तो उसका एक पेंटिंग बनाया गया 5 वर्ष के लड़की का, अति सुंदर ऐसा चित्र। और फिर वो भूल गए उसको, और वो कोई तो भी गोदाम में पड़ा हुआ था बहुत साल के बाद। अब ये प्रिंस जब बहुत बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, तो एक बात जब वो ही वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द शस्त्रागार एंड अदर थिंग्स, ऑल ऑफ ए सडन ही सॉ दैट ओल्ड पेंटिंग, ओके, 5 years old ब्यूटीफुल गर्ल, and he fell in love with that girl. He says that this 5 year old girl is so beautiful. Now she must be almost of my age only, and she must have become a very beautiful young lady. And he had the desire to marry her. कि इस युवती के साथ ही अब मैं शादी करूंगा, तो इसी के साथ करूंगा, मन में धर लिया। बट देन ही वॉज यंग, ही कुड नॉट स्पीक, एंड ही कुड नॉट, वो खोजते गया, कभी कहीं उसको मिले ना। उसने बहुत सारा उसके दूध भी भेजे कि कहीं ऐसे लड़की है क्या बहुत सुंदर। तो देर वॉज वन ओल्ड वेरी वाइज मैन इन द किंगडम। तो राजा ने बताया कि इसको क्या हो गया है पता नहीं है, 20 साल का लड़का है, इसको क्या हो गया है पता नहीं है। he gets distracted, he gets irritated. Find out what is it. That old man, wise man, talk to him and say, you can talk to me very freely. Hmm. Let me know what is going on in your mind, and we'll definitely find a solution. Then this man opened out, these young people, and he said that I have fallen in love with a girl. He said, this is very good. We want a beautiful princess. You just tell me the name and where she is. He said, unfortunately, I do not know her name and anything. Then how do you know her? I know her because there is a picture of her in our own राजमहल में उसका उसका चित्र है। वो लेके गया, उसको वो चित्र देखा, एंड एट वंस ही अंडरस्टूड दैट दिस वाज हिज ओन पिक्चर एक्चुअली। कि वो जब छोटा था तो उस समय वो दैट ओल्ड मैन वाज देयर एंड ही नो द एंटायर थिंग। और उसने बता दिया कि अरे भाई, ये कोई ऐसा प्रिंसेस वगैरह नहीं है, ये तुम्हारा ही चित्र है। जब तुम 5 साल के थे तो तुमको ही वो लड़की के कॉस्ट्यूम्स दिए गए थे, पिक्चर निकाला गया था। एंड एट वंस ही अंडरस्टूड दैट दिस इज मी ओनली, दिस इज नॉट सम लेडी, दिस इज नॉट सम गर्ल, इट इज मी ओनली। और तत्क्षण उसका जो अट्रैक्शन था वो चला गया। ही रियलाइज द सेल्फ। नाउ दिस इज व्हाट इज टोल्ड बाय अष्टावक्र इन दिस पर्टिकुलर वर्स, कि व्हेन यू नो दैट इज इट इज, तो उसके मन के पूरे विकार चले गए। सो दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी in the scriptures, that how he realized that there is no lady there, but it is me only which is that lady. If you see yourself in everything in the world, actually world is a projection of your mind only. Word is nothing but your mind only. If you start looking at everything as your own consciousness expressing outside in different way,
at once you will be free from everything. That is what this is telling us. We shall have one more verse because that is the last verse, and then we'll stop. Verse number 8. Vasana iva samsaraha iti sarva vimuchyataha तस्त्यागो वासनात्यागात स्थितिरद्य yatha tatha. So that is the last verse in this. Desires alone is the word. What is the word? वासना इव संसारा. तुम्हारे मन में जो इच्छाएं आती है वही तो जगत है. इति सर्वा विमुंचताः. Know this and renounce all desires. तस्त्यागो वासना त्यागात. अगर वासना का त्याग हो गया, क्योंकि वासना ही पूरा संसार जो है वो वासना के सिवा और कुछ नहीं. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ओनली योर डिजायर्स. Renunciation of desires is the renunciation of word. One more equation which is given by Ashtavakra. Renunciation of word means renunciation of वासना त्याग. यही जगत का त्याग है. And this is what is been told again and again, even in Yoga Vasishtha. द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासना. वासना और प्राणस्पंद ये चित्त के दो बीज है, और उसमें से एक का क्षय करने से दूसरे का अपने आप क्षय हो जाता है. प्राणस्पंदात मनोरूपम तस्मात् संस्कृति विभ्रमा. दैट इज व्हाट योग वशिष्ठ सेज कि प्राणस्पंद से ही चित्तस्पंद जागृत होता है, मन जागृत होता है, और मन जागृत होने से ही विश्व की अनुभूति आती है. तस्मात् संस्कृति विभ्रमा. संसार का जो विभ्रम होता है, ये जगत का जो विभ्रम होता है, भ्रम होता है, वो केवल चित्त का ही विभ्रम है. इट इज ओनली ड्यू टू द माइंड. वर्ल्ड इज प्रोजेक्टेड बाय योर माइंड ओनली. और फिर हाउ डू वी गो अबाउट annihilation of that word? Vasana tyag. That is why this is the main sadhana which has been told in Yoga Vasishtha, in on the text. Vasana tyag, यही संसार का भ्रम नष्ट करने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधना बताई गई है. वासना त्याग, इलिमिनेशन ऑफ डिजायर्स, यू नो. और जिसका वासना त्याग हो जाता है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? स्थिति अद्य यथा तथा. जो भी स्थिति में वो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. स्थिति अद्य यथा तथा. Whatever is the situation at present, he is very happy. Whether it is miserable condition, whether it is tense situation, whether it is comfortable situation, he is not moved by any external situation. जिसने वासना त्याग किया, one who has renounced all desires, उसका संसार त्याग हो गया. He has renounced the world itself. उसका जगत का भ्रम नष्ट हो गया, और जगत का भ्रम जिसका नष्ट हो गया. स्थिति अद्य यथा तथा. किसी भी स्थिति में ही इज इक्वानिमस, ही इज कंफर्टेबल, ही इज नॉट मूड एट ऑल. यानी बाह्य परिस्थिति उसकी चेतना को हिला नहीं सकती. दैट इज व्हाट दिस वर्स इज टेलिंग. कोई भी बाह्य, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आवर मूड्स, our intention, our life is dependent upon external situation. बाह्य परिस्थिति ही हमारा जीवन कैसा है डिसाइड करती है. Now you can decide your own life. You can be always blissful, always equanimous if you do vasana tyaga, desirelessness. Okay, and so such a person who has done vasana tyaga, so a yogin who is desireless will be very comfortable in the forest, or in the palace, or in the hot sun, or in the thundering clouds, or in the freezing cold, or in the desert. Everywhere, everywhere he will be very comfortable without any problem.
There is no effect on him of any insult or any praise. No external situation will really do anything. I will just tell one Zen story which I remember now, and then we'll end the session. There was a Zen monk who was staying in the outskirts of a village. गांव के बाहर वो रहता था और वो अपनी साधना में ही मस्त था. And many young people also used to visit his ashram, and it was very nice. So there was a very young, beautiful lady, girl rather, and another very young man, and they fell in love with each other. And the lovebirds, they thought that ashram is the best place for making love and other things, because it was solitude, such a vast ashram with so many trees. So they used to go to the ashram for making love in solitude. And naturally, the girl became pregnant. When she became pregnant, she was so much afraid, fear, because what will happen now? तो जब उनके घर वालों को पता चला कि वो अभी गर्भधारणा की हुई है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, कौन है वो लड़का. And she thought that now my beloved, that lover will be punished like anything. So she told that it is because of that sadhu, because of that Zen monk who is there. मैं तो आश्रम में जाती थी, और वो आश्रम में वो साधु ने ही बलात्कार किया, और इसलिए actually a lie, in order to save herself, in order to save her lover, she spoke a lie. And she told it is because of that sadhu. So the whole village came to that Zen monk. They abused him, and they said that to you are a very horrible fellow. Now that Zen monk, not a word he spoke against them, against his own defense. Only word he will speak is that so? Is that so? They said that, look, this girl has become pregnant. Is that so? And she is telling that you are responsible for. Is that so? No reaction at all. And then the villagers told that immediately, right now, leave this ashram, go to the jungle and stay. He said, is that so? And he instantaneously left the ashram, went to the jungle. Then after some time, this girl, she gave birth to a small child. So the villagers took that child to the monk, and he said, it is your child and you have to look after it. The monk said, oh, is that so? Is that so? And he happily accepted that child. And then he started looking after it. He started enjoying the presence of the child. The child grew into a very beautiful young man. He was extraordinary, beautiful and extraordinary child, really speaking. बहुत बड़ा हो गया, बहुत पराक्रमी हो गया. And then this girl, by that time, they had grown up. And then this girl told the truth to the house that no, actually it is not that sadhu child. We had fallen in love, but we had no courage to tell you. Now we are getting married. It is our child, and now he has grown up into a nice boy and with so many qualities. Now we want our boy back. जो लड़का है अभी हमको वापस चाहिए. तो सारे चले गए फिर से साधु के साथ. हे साधु, ये तुम्हारा लड़का थोड़ा ही है, ये तो ये लड़की का लड़का है, और अभी वो बता रही है कि तुमने कुछ नहीं किया था. Now give that child back. The sadhu said, is that so? Please take that child back. He saw it. Now this is what is known as Nirveda sadhana. He was not at all. He was happy. He was blissful. When the child came, he was blissful. When people gave so many, called him names, he was not affected. When the child was asked back, he was not affected. This is what really means
by the sadhana vasana tyagat, renunciation of the worldliness itself. This is what this three type of sadhana which has been told in this chapter means. Nirveda Samadha Yuktya. So that is what he had adopted actually, the Zen monk. Well, we have exceeded the time a little bit, so I will stop here with a prayer. But if you have time and if some comments are there, if some observations are there, and if the time is available, we can go ahead. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. So once again, very happy Dashara to everybody. You too, sir. Yes, sir. Thank you very much. Happy Dasara to you too, sir. Thank you, Yeah. thank you, thank you. Sir, to all. Happy Dasara to everyone, sir. Happy Dashara to everybody, Sir, everybody. happy Dasara. Happy Dashara. Thank you very much. Thank you very much, everybody. आप आ रहे हैं ना उधर? हाँ